Amid reports of panic buying in parts of India, the government has assured that India has sufficient LPG stocks to meet household cooking gas demand, even as disruptions in West Asia affect India's energy supplies. Officials say efforts are underway to secure alternative shipments of oil and gas after the conflict halted movement through the Strait of Hormuz. The government said refineries have boosted domestic LPG production by about 25%, while companies have also secured additional LNG cargoes to offset supply disruptions. Now, authorities have prioritized household LPG supplies, while commercial users such as restaurants and industries may face tighter allocations. Officials have also warned against panic booking and hoarding, saying there is no shortage of cooking gas for households. Let me come to LPG supply, which is directly relevant to households. As on today, we import about 60% of our requirement of LPG, and 90% of this is through Strait of Hormuz. The government has taken various steps to deal with this situation also. जैसे कि भारत सरकार ने has issued an order on 8 March, जिसके द्वारा उन्होंने रिफाइनरीज और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सेस को एलपीजी उत्पादन को मैक्सिमाइज करने का आदेश दिया. Feedback suggests that some panic booking and hoarding behavior has been triggered by misinformation. इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारा जो नॉर्मल डिलीवरी साइकिल है फॉर डोमेस्टिक एलपीजी, इट रिमेन्स अराउंड 2.5 days. तो अगर आप सिलेंडर बुक कर रहे हैं तो 2.5 दिन के अंदर आपको सिलेंडर की आपूर्ति होगी. इसीलिए आई रिक्वेस्ट देयर इज नो नीड फॉर कस्टमर टू रश बुक द सिलेंडर. सो पैनिक बुकिंग करने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है. Staying with that story of a brewing LPG crisis, Prime Minister Narendra Modi reiterated on Wednesday that the government is committed to an India-first approach amid rising tensions in West Asia and the impact on global energy supplies, including LPG. Addressing a rally in Tamil Nadu, Prime Minister Modi said the conflict has affected the world's energy supply chain, but assured that the centre is prioritizing India's interests. He also urged people not to fall prey to what he calls misinformation, saying the government is working to safeguard the country during the evolving situation. To remember, Tamil Nadu goes to polls in just a couple of months from now, and any constraint in supply of LPG or increase in fuel prices could hurt the BJP's electoral outcome. गल्फ में, वेस्ट एशिया में जो कुछ हो रहा है, उससे आप सभी का चिंतित होना बहुत स्वाभाविक. हमारे लाखों भाई बहन वहां काम करते, लेकिन साथियों, आपको याद रखना है, आज देश में बीजेपी एनडीए की सरकार है. जब भी हमारा कोई देशवासी संकट में पड़ा, हमने उसे सुरक्षित बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी. इराक में फंसी नर्सों को बचाने की बात हो या यमन के आतंकवादियों के चंगुल से फादर टॉम को आजाद कराने का काम, आज का भारत अपने नागरिकों को संकट में अकेला नहीं छोड़ता. फादर एलेक्सिस प्रेम कुमार को भी हम अफगानिस्तान से सुरक्षित वापस लाए. आज भी हमारा प्रयास है कि युद्ध के हालत में फंसे भारतीयों को सुरक्षा मिले, हर संभव सुविधा मिले.